for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 11th October, that is Wednesday. आज 11th October Wednesday है, and we are here with the Hindu analysis of Wednesday. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? So these are the two important articles. Delhi's Lieutenant Governor sanctions Roy's prosecution in 2010 case. Israel retakes Gaza border areas, toll crosses 3,000 and all. Okay, so yes. आवाज आ रही है? एक बार लिख देना. Yes sir, you're audible. Okay, so basically this was an article. The Lieutenant Governor of Delhi, Mr. 𝗟𝗏 𝗥𝗲 on Tuesday granted prosecution sanction. Sanction मतलब एक तरह से permission. Sanction prosecution sanction लिखा ना, means permission to initiate a case. ना, permission to initiate case against Arundhati Roy and former Kashmir University professor Sheikh Shaukat Hussain in a 13-year-old case. So basically it is a case of 2010 where a conference was held by the Committee for Release of Political Prisoners under the banner and all, the Azadi the Only Way. So so for that, actually recently the Lieutenant Governor has actually allowed for prosecution and all. Okay, so according to this, yes, आप देख सकते हो, on Tuesday Arundhati Roy and former Kashmir University professor in a 13-year-old case. According to राजनिवास मतलब वही राजभवन को गवर्नर्स हाउस कहते हैं. यहाँ पे राजनिवास is actually referring to Lieutenant Governor's house or Lieutenant Governor's office. Okay, so sources, the FIR in the case has registered on November 29, 2010 on the direction of Metropolitan Magistrate in New Delhi under various sections of IPC, like sedition, promoting enmity between two groups, religious, race, etc. So FIR was registered in 2010. Okay. However, the prosecution of sanction was done under these sections except sedition. So sedition के मामले में prosecution नहीं दिया गया. Why? Because the Supreme Court has actually directed all pending trials, appeals and proceedings with respect to charge framed under 124A to be kept in abeyance. ये बहुत famous हुआ था, I mean 2 years back actually, when Justice N.V. Ramanna was the Chief Justice of India. Supreme Court puts colonial sedition law on hold. So this is actually the May 2022 news. Okay, so because of which the Lieutenant Governor, Rajniwas official said that the prosecution sanction was not granted under 124A because the Supreme Court has actually stayed it. Okay, देखो उसमें stay लगा दिया है ना दो साल पहले, 1.5 साल पहले. Okay, and that is why actually you should be knowing about it. Just go and read something about Arundhati Roy. She has won, I think she is actually author, written many books and all. I think she has won some Booker Prize and all also. So thoda sa आप go and read about her also, like the awards she has won and all. Okay, the famous books. So some of the famous books also, you should be aware of that. Okay, yes. Now so let's move on. Israel takes Gaza border and all. So there have been some news and all regarding it. So I have told you, where is India? This is, you will find Israel. This is Gaza. So when the attacks happened, I think some of the portion were actually there, and it was retaken by the Israel and all. That is what according to this article, according to agency France Press and all. So just have an idea. God of Small Things is a book. Very good. Booker Prize novel. Very good, Nandana. You know this. Good. God of Small Things is a very famous book, which won some award. God of Small Things. ये स्कूल डेज में से पढ़ाया जाता था ना, मतलब स्कूल डेज में जीके की बुक में एंड ऑल. यस. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. सो देखो, एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड इट अबाउट ऑपरेशन अलेक्सा स्टॉर्म एंड ऑल. ओके, एंड यस्टरडे की क्लास में जो भी प्रीवियस क्लासेस को आप फॉलो करते रहना, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज एक्चुअली द अल-अक्सा मॉस्क. ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. Okay, and this is Dome of Rock. Many people get confused. Many people believe that this is Al-Aqsa Mosque. No, this is not correct. This is Dome of Rock, and this should be the grey in color. ये जो golden color वाला है ना, golden color dome, that's called as Dome of Rock. इसको Temple Mount भी I think कहते हैं, कुछ Temple Mount something इस तरह के spelling है, एक बार check कर लेना. Okay, so and this is Al-Aqsa Mosque. All are actually in the same compound in Jerusalem, East Jerusalem region में. Okay, so go and read something about it. जैसे ये है अल-अक्सा मॉस्क हो गया, this is Dome of Rock. एक और है वेस्टर्न वॉल या बुराक वॉल कहते हैं इसको. आप पढ़ना जाके, what is बुराक वॉल और वेस्टर्न वॉल and what are its significance and all. Okay,
Al-Aqsa Mosque is there, Dome of Rock. So there is some actually really has some significance related with Prophet Solomon and all. ये सब पढ़ना थोड़ा सा, go and read it. Otherwise, in the toppers batch, I will try to cover this and all. Okay, yes. एक और आर्टिकल थे नीचे, सुप्रीम कोर्ट सेट्स 31st October for hearing electoral bonds case and all. I hope you are aware of electoral bonds. It was challenged in the Supreme Court, and recently the Supreme Court has decided ADR, Association for Democratic Reforms. This is we can say non-profit organization, or I think an NGO working for electoral reforms. एक बहुत फेमस केस भी है ADR, Union of India versus ADR case. Versus ADR case. That is a very famous case. Okay, so they challenged it actually. Why? What is the reason why it has been challenged? So the main reason is actually anonymity. Anonymity. So basically, when someone donates, let's say there is a person called as XYZ. If that XYZ wants to donate to a political party, let's say ABC party. I'm just giving an example. So there is a party whose name is ABC. So if he or she donates via electoral bonds to a party called as ABC party, then the people will not get to know. It is he or she will remain anonymous. मतलब लोगों को पता नहीं चलेगा कि XYZ कौन है जिन्होंने donate किया. Okay, so this was the reason why this was actually challenged and all, that on the ground of anonymity. The point is the purchaser of the bond enjoys anonymity. तो purchaser of bond वही होगा जो donate करना चाहता है fund. So the one who wants to donate actually the fund to the ABC is actually the purchaser of that electoral bond. जो bond खरीदेगा वही ना donate करेगा ABC पार्टी को. So उस आदमी के लिए वो anonymous है, लेकिन लोगों को नहीं पता चलेगा that who has donated this much amount and all. Okay, so that is what you should be knowing it. Okay, तो इसी को चैलेंज किया गया. अब जब हियरिंग होगी, so we will get to know about it जब उसमें हियरिंग होगी and all. Okay, before moving on guys, this is all India open mock from 28th to 29th October. So please attempt it. So download our app, go to CLAT section, and there you will be able to attempt this all India open mock. Okay, from 28th to 29th October. Okay, so 2024 test series, I hope many people are attempting it. So जिन्होंने नहीं attempt किया, please attempt it. Everyone should attempt it. That would be beneficial for you only. And ये 2025 batch के लिए specially है. Those who are planning for next year, we are having a crash course. If you have any, those who are planning for next year, sorry, not crash course, complete course, है ना? Next year के लिए complete comprehensive course है. Okay. So if you are planning for next year, this is you can call on this number 953889567, and 15th October को 11 AM in the morning we'll be having a test. So if you qualify this test, you will get up to 90% discount on this course. Okay, yes. So let's start with the tutorial. Women want change, society needs change and all. Okay, so there's a question for you. Who releases global gender gap report? Your options are International Monetary Fund, World Economic Forum, World Bank, United Nations Women. Your time starts now. सबको ट्राई कीजिए. ये शुभराज, आप धीरे धीरे रिवाइज कर लो, कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी. एक बार ऊपर से देख लो, है ना? हाँ, रिविजन इज इंपॉर्टेंट. हाँ, yes, global gender gap report is World Economic Forum releases it. So B is the right answer to this question. यहाँ का बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. Yes, नंदना, नम्रा, ऋषि, कुमार झा, हरप्रियक, नंदना, नम्रा, आफ्ताब, आलिया, कौसर, जिया, you all are right. जिन्होंने भी हम सबका नाम नहीं ले सकते हैं because there are a lot of people have answered it. Now, so the 17th edition of Global Gender Gap Report of the World Economic Forum published in June this year on the data of 146 countries has concluded that the current rate of progress, it will take 131 years to close the gender gap. यानी वर्ल्ड लेवल पर 131 साल लग जाएगा मेल और फीमेल के बीच जेंडर गैप को रिड्यूस करने में, खत्म करने में. एंड इन पॉपुलस कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, इट विल टेक 149 ईयर्स. और जहां पे साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, खास जैसे इंडिया को उन्होंने एग्जांपल दिए, तो 149 ईयर्स लग जाएगा मेल और फीमेल गैप को खत्म करने में. दैट इज व्हाट द ऑथर इज कोटिंग. Now, what is India's rank in Global Gender Index? And these are options: 121, 127, 136, 142. बताइए इंडिया की रैंक कितनी है? अच्छा, कुछ लोगों ने पहले ही आंसर बता दिया.
चलो ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में व्हाट इज इंडियाज रैंक, ये कई बार न्यूज में आ रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो रैंकिंग पूछा उन लोगों ने, ठीक है। सो रैंकिंग पूछ सकते हैं, यू शुड रिमेंबर इट। यस, नंबर आफ्ताब हैज ऑलरेडी आंसर्ड इट। यस, प्रभु, नंदना, नंदिता, कृष्णा। 127 इज इंडियाज रैंक। So it climbs 8 places. यानी पहले 135 था, 127 हो गया. So you should remember this one this year. So India's rank according to World Economic Forum report, Global Gender Gap Index is 127. ठीक है. Now reservation is the most effective form of affirmative action and equity is the first step. अच्छा, आपको पता है अभी जो इस बार जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है, वो भी जिनको दिया गया है वो वुमेन से रिलेटेड ही है उनका काम. सो शी हैज वर्कड ऑन वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, है ना, मैंने आपको कल डिस्कस भी कराया था. सो ऑल्सो इन दैट सेंस ऑल्सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो रिजर्वेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. देखो ये एक्चुअली अफर्मेटिव एक्शन जो होता है इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, है ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन. सो शी इज एक्चुअली सपोर्टिंग रिजर्वेशन फॉर वुमेन. ओके, दैट लीड्स टू एफिशिएंसी. तो वो बता रही है कि देयर आर दैट लीड्स टू simply making excuses or not and all. So some people are saying कि reservation से inefficiency बढ़ जाती, but that is not correct. Okay, inefficient. These are the things she is talking about. A very astute person once asked me whether we want women to fight women. The answer is no. What women want is a level playing field and all. So she is talking about level playing field. Yani both men and women should be taken, should be considered as equal and all. Okay, that is what she is talking about. The basic premise of advocates against reservation is that it will bring down competence. However, alas, this is completely misplaced notion and all. So she is saying that those who oppose reservation for women, they say that it will compromise with the quality or compromise with the competence. But she is saying that is not the case. She shows that women perform better than men in academics, more women graduate from college and all. तो उनकी दलील ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है. That's not the case. In fact, in many cases, women perform better. That is what the author has written. The inauguration of parliamentary business in September 2023 in the new parliament building. Yes or no? देखो अब ये आपको पता होगा 108 जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अभी पास हुआ रिसेंटली. ओके, 128th वुमेन बिल था ये. सो दैट इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, दैट दिस इज अ गुड थिंग एंड ऑल, कि यस वी नीड रिजर्वेशन इवन इन द पार्लियामेंट. जैसे हम लोग का स्टेट पंचायत लेवल पर है ना, 3rd tier लेवल पर है. सो सिमिलरली वी नीड इन MP and legislative assembly also some sort of 33% reservation. It is indeed a groundbreaking event while India's founding fathers ensure that India was early adopt universal and franchise. The role of women in shaping country's political future still remains minimal. अब देखो ये बताने ही चाह रही है कि yes, it is true that when India got independence, the constitution makers ensured universal adult franchise. And कहाँ mention है? Article 325 and 326. If you read together, this is actually leads to universal adult franchise. Universal adult franchise का मतलब if you are 18 plus and an Indian citizen, you have a right to vote. है ना, पहले 21 था, अब 18 कर दिया गया. Right to vote, irrespective of religion, race, caste, gender, etc. and all. Okay. So अगर आप 18 plus के Indian citizen है तो चाहे किसी भी religion, caste, gender के हैं, आपके पास अधिकार है वोट करने का. However, the role of women in shaping country's political future still remains minimal. तो ये बात तो ठीक है, इट्स गुड दैट यस वुमेन हैव द राइट टू वोट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बट स्टिल द रोल ऑफ वुमेन इन शेपिंग पॉलिटिकल फ्यूचर मीन्स रोल ऑफ वुमेन यू कैन से इन पार्लियामेंट और रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिसी मेकिंग कह सकते हो, या रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल लीडरशिप इज स्टिल मिनिमल. दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. आपको पता होगा, आई थिंक समवेयर अराउंड लोकसभा MPs इज समवेयर अराउंड 14 or 15%, है ना. So that is what global trends exhibit a sharp reduction in the age of political leaders, but can a common Indian woman just by her commitment, ambition, dream of becoming prime minister like at the age of 37 just in the Ardern? I hope you are aware she actually became the prime minister of New Zealand at the age of 37 and after a few years of service she actually resigned. तो अभी recently उन्होंने resign कर दिया था जनवरी में, and she was considered as one of the youngest female head of the state, है ना. 37 years की उम्र में वो बन गई थी उस टाइम पर. तो ये बता रही थी क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक 37 ईयर की फीमेल है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ओके, सो अक्रॉस द वर्ल्ड वुमेन आर अप्रिशिएटेड बाय सोसाइटी इन सपोर्टिव इमोशनल रोल्स बट वेरी सेल्डम इन लीडरशिप रोल्स. सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर दैट वुमेन आर एक्चुअली अप्रिशिएटेड इन सपोर्टिव एंड इमोशनल रोल्स, बट लीडरशिप रोल्स में इन मेनी केसेस वुमेन आर नॉट सपोर्टेड. That is what the author is saying. The world hates and denigrates ambitious women.
मतलब कई बार एम्बिशियस वुमेन को हेट किया जाता है. टेक फॉर एग्जांपल हिलारी क्लिंटन. देयर इज नॉट एन आइटा ऑफ डाउट दैट हर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड अक्यूमेंट ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प्स competency. So she is comparing actually Hillary Clinton with Donald Trump and she said that Hillary Clinton was much competent as compared to Donald Trump. ये सब बात बता रही है. ठीक है. हाँ, yes, Sanna Marin is also from Finland, youngest head of the state. Yes, Nandana, good. हाँ, इनके बाद एक और बनी थी. Good, very good. Sanna Marin from Finland, also one of the youngest head of the state, female में. Okay, despite these privileges, women also take longer to assume leadership and all. So she is saying कि even if she is given privilege, she takes longer role. जैसे for example उन्होंने एक example दिया कि when Prime Minister Nehru died in 1964, so when Nehru died, his daughter did not become the Prime Minister. Rather, then there was Lal Bahadur Shastri became, and after 1966, Indira Gandhi became the Prime Minister. Okay, but when author is saying that when Indira Gandhi died, there was a male son who became this prime minister immediately. Okay, Rajiv Gandhi. That is what she is quoting. तो जब फीमेल को अगर बनना था, अगर सक्सेसरी बनना था या प्रिविलेज फैमिली से था, तो उसमें टाइम लगा, लेकिन अगर मेल का था तो उसमें टाइम नहीं लगा. दैट इज व्हाट शी इज कोटिंग. ये वो बोलना चाह रही. सो राजीव गांधी ऑन द अदर हैंड, बाय बीइंग वर्च्यू ऑफ अ सन, became the prime minister or successor immediately. That is what she is saying. Okay. The deepest gut is that a handful of privileged women who assume leadership are not supportive to empathic to the aspiration of those women who do not even have access to the basic needs and all. तो ये बता रहे कि हाँ, there have been privileged women मतलब जो अच्छे खानदान से आती हो, those who are actually from the rich family and all or better family and all. But yes, we need to have focus on those who are actually from the poor background as well. Okay, so there are women who still suffer from nutrition, education, financial independence and all. And these privileged women needs to support the poorer women and all. Okay, and then she's actually quoting the history roundtable conference. एक बहुत famous था ये All India Women's Conference 1927 में बना था. So this was very much instrumental in ensuring women's right during international movement. ऐसे कई बार पूछा भी जाता है कि क्या was there any role of women in Indian national movement? Yes, and one of the example is this. However, there are other examples as well. All India Women's Conference. It was led by Margaret Cousin. इसमें और भी लोग थी, और भी females थी, like I think Sarojini Naidu and others were there also. So that is what she is giving an example of that. And All India Women's Conference. For एक Women's India Association भी था. Okay. Then Central Committee of National Council of Women, others, etc. were also there in that case, है ना? The biggest block is the regressive views. तो ये बोलना चाह रही है कि जो regressive या negative views against women होता है, that is also the biggest block or road block या रुकावट जिसको कह सकते हो. So she is quoting some of the politicians and all that who has given that only the elite. So the reservation of women will only champion the cause of educated urban and elite women, not the poor women of poor families and all. So she has actually criticized this statement and all. इसमें थोड़ा सा डिबेट वगैरह चलता है कि अगर वुमेन्स रिजर्वेशन दिया गया 33%, so will it only benefit the women of rich family, rich and affluent family, or will it be beneficial for the poor women also? तो ये एक्चुअली इट्स अ लिटिल डिबेट टाइप थिंग कि क्या अगर वुमेन को अगर 33% जैसे लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो 33% सिर्फ अच्छे रिच फैमिली की वुमेन आएंगी या गरीब के घर की या लोअर फैमिली से जो लोग हैं उनके भी फीमेल आएंगे. सो दैट्स अ डिबेट. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, but just have an idea about, because there's a debate about it. Which SDG talks about gender equality? Your options are SDG 5, SDG 10, SDG 11, SDG 7. ये कई बार न्यूज में रहता है जेंडर इक्वालिटी एंड ऑल, सो यू शुड बी नोइंग इट. थोड़ा सा जेंडर इक्वालिटी आर्टिकल 39 में मेंशन है, आर्टिकल 42 में भी थोड़ा सा मेंशन है जहां पर मैटरनिटी रिलीफ की बात कही गई. ठीक है, फिर कुछ देखो, चूंकि वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो आपको वुमेन और इक्वालिटी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, पॉश एक्ट इज देयर, विशाखा गाइडलाइंस इज देयर. ठीक है, ये सब पढ़ लेना. देन विशाखा इज अ सेपरेट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड. तो वुमेन्स इक्वालिटी से रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स हैं या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या फेमस लॉज हैं, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज देयर, मतलब एग्जाम्पल बता रहे. देन देयर आर अदर्स लॉज ऑल्सो. ठीक है, जो इनहेरिटेंस एक्ट होता है, ओके, कि इक्वल इनहेरिटेंस एंड ऑल. सो ये थोड़ा सा आप उस पर फोकस कीजिएगा, बिकॉज नाउअडेज वेरी मच आर्टिकल्स आर कमिंग इन रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी. सो एसडीजी 5 ए इज द राइट आंसर. जेंडर इक्वालिटी अगर लिखा है तो फिर एसडीजी 5. अगर रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी लिखा है, इसलिए कि ये इन जनरल हो सकता है. इन इक्वालिटी सिर्फ
मतलब और भी बेसिस पे हो सकता है ना, नॉट एनी बेसिस ऑफ जेंडर बट अदर रिलीजन और कैसे कास्ट बेसिस पर या कोई और बेसिस पर भी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी या मॉनेटरी टर्म्स में। लेकिन अगर स्पेसिफिकली जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो SDG 5 पर आंसर होगा, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। हाँ, सो बहुत सारे लोग आंसर किया, वेरी गुड। नंदिता, नंदना, स्वप्निल, अरबा, मोहम्मद अर्श, ए इज द राइट आंसर। SDG 5 जिन्होंने भी ए आंसर किया, ऋषि कुमार झा, आलिया कौसर, यस। Why do women have to wait so long to choose the gender to reduce the gender gap? The bill is the first step towards actualizing the gender parity. One only wishes it's and all. However, would be based on a readjustment of seats on the 1991 census as it is done for scheduled caste seats by delimitation rather than waiting for it. अब तो कोई बोल रहे कि हाँ ये बिल बहुत अच्छी चीज है कि it's a positive step of women's empowerment or reducing the gender gap. However, she believes that we should not wait for the next census. तो अगले जैसे हम लोगों ने बताया था कि 2026 के बाद अगला सेंसस, आई मीन 2026 द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज फ्रीज्ड एंड आफ्टर दैट सेंसस विल हैपनिंग एंड देन ओनली द रिजर्वेशन विल बी इंप्लीमेंटेड। बट शी इज सेइंग वी कैन डू इट विद द 1991 सेंसस बेसिस एंड ऑल, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए किया गया। मतलब वो कहना ये चाह रही है कि इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, वी शुड नॉट वेट, rather than we need to implement this reservation of women of 33% as soon as possible। ये उनका कहने का मतलब है, ठीक है, ओके। देखो ये जो साइड में आर्टिकल थी थोड़ा पॉलिटिकल थी टॉप में, तो वो मैंने स्किप कर दिया। फिर ये मालदीव्स एवोल्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। ओके, अभी रिसेंटली एक्चुअली द इलेक्शंस हैपन इन मालदीव्स। थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव समझना है। द साउथ एशिया स्मॉलेस्ट नेशन सेंट अ क्लियर सिग्नल थ्रू इट्स लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग इन ऑल। खैर, अब देखो इसमें होता क्या है, पहले देख लेते हैं मैप में कहाँ पे। सो एयर इज इंडिया, ये साउथ इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका, ये जो छोटा छोटा है ना देख रहे हो ना, ये दिस इज मालदीव्स। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? इसकी कैपिटल बताइए और इसका करेंसी बताइए। प्लीज टेल मी द करेंसी एंड कैपिटल। ओके, नाउ देखो अभी रिसेंटली द इलेक्शंस हैपेंड बिटवीन मोहम्मद मुइज़ू फ्रॉम PNC एंड MDP पार्टी से इब्राहिम मोहम्मद सोली। सो ही वाज द प्रेसिडेंट, ओके, जस्ट बिफोर द इलेक्शन, बट ही लॉस्ट एंड द न्यू प्रेसिडेंट इज दिस पर्सन, ओके, ठीक है, इज द न्यू प्रेसिडेंट। हाँ, मालदीव की कैपिटल माले है और करेंसी फाइंड आउट करो। अब देखो था क्या ना कि इब्राहिम मोहम्मद सोली वाज कंसिडर्ड एज प्रो इंडियन, ऐसे जनरली जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। मोहम्मद मुइज़ू जो है ना, ही इज जनरली कंसिडर्ड एज नॉट वेरी प्रो, और यू कैन से कई बार तो इनको क्या कि इंडिया आउट कैंपेन में भी शामिल थे। सो यू कैन से कि नॉट सब प्रो इंडियन, ऐसे लिख सकते हैं। एंड इन फैक्ट देयर हैव बीन सम न्यूज़ दैट परहैप्स ही विल फेवर चाइना एंड ऑल, ओके। हाँ, रुफिया करके करेंसी है, समथिंग रुफिया करके, स्पेलिंग देख लेना, ऐसा कुछ है, प्लीज चेक इट, ओके। और एक और चीज चलो पूछ रहे, ऐसा होमवर्क है, यहाँ लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है ये फाइंड आउट करना। व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन हियर, मतलब प्राइमरीली द लैंग्वेज स्पोकन, ओके। नाउ इंडिया लुकिंग टू एंगेज विद द न्यू मालदीव्स गवर्नमेंट ऑन ऑल इश्यूज, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। व्हाई? कैंपेन ऑन इंडिया आउट पोल प्लैंक। तो इनका जो था ना, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया आउट जो कैंपेन हुआ था उसमें हिज रोल वाज देयर इंडिया आउट कैंपेन में। आई हैव टोल्ड यू ना, ही इज एक्चुअली सपोर्टिव ऑफ इंडिया, मतलब प्रो इंडियन है, एंड ही इज एक्चुअली अगेंस्ट द इंडियन स्टैंड एंड ऑल, ओके। So and he won it, so that is why now we are thinking ki what will be the next stand and all। अब देखो कि मालदीव्स मुइज़ू मार्च इज विक्ट्री ऑन एंटी इंडिया ड्रम बीट, लिखा ना, देखो निकी एशिया की आर्टिकल है। इंडिया आउट कैंपेन वाज स्टार्ट इनिशिएटेड इन 2021 and it is said that the recent winner is also one of the one who actually supported this campaign and all these things were coming in the news। हाँ, 𝗟𝗲𝗴𝗋 language है, this is very much spoken in the Maldives and all। हाँ, तो ये बता रहे मोहम्मद नशीद, एक्चुअली मोहम्मद नशीद जो है ना, ही इज एक्चुअली द फ्रॉम दिस कैसे प्रो इंडियन कहा जाता है थोड़ा इनको, ठीक है। सो पास्ट में जा रहे, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम वाज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, देन मोहम्मद नशीद बिकेम, देन अब्दुल्ला यामीन बिकेम। अब्दुल्ला यामीन इज एक्चुअली फ्रॉम दिस साइड, आई मीन एंटी इंडियन आइडियाज, ओके, और प्रो चाइना लिखा ना, देखो अब्दुल्ला यामीन द मोस्ट प्रो चाइना प्रेसिडेंट सो फार। एंड देन आफ्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली हु बिकेम, सो ही इज एक्चुअली प्रो इंडिया, जनरली कंसिडर्ड, मतलब फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ऐसे ही कहते हैं कि कंपैरेटिवली, हाँ ना, देखो जैसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है ना मोहम्मद इब्राहिम सोली, सो द वन हु लॉस्ट द इलेक्शन रिसेंटली। नाउ द न्यू विनर मोहम्मद मुइज़ू इज अगेन द सपोर्टिव ऑफ अब्दुल्ला यामीन, वही आइडिया वाले, ठीक है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। सो क्यों जीते नॉल, अब इसमें क्यों उतना नहीं जानना है, ठीक है, एक बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्रेसिडेंट यामीन फ्रॉम प्रेसिडेंट टू हाउस अरेस्ट एंड ऑल। अब देखो क्या है कि ही वाज आल्सो
both are from similar parties, ठीक है, ideas, ideology and all. So he is the recent winner. और इससे पहले जो थे, I mean from 2013 to 18, मतलब पहले से पहले, so he was actually also the president. He was in jail because of some corruption charges. But now when he came to power, and he both are from same ideology, same political alliance or same political ideology, he is now put in, instead of jail, he is now sent to house arrest, which is generally considered as less stringent. तो हाउस अरेस्ट करना जो होता है वो कम होता है ना, इसलिए कि जेल से आप बाहर आ गए, आप घर में रह सकते हो, बस घर के बाहर नहीं निकल सकते हो. सो जेल मालदीव्स एक्स प्रेसिडेंट ट्रांसफर टू हाउस अरेस्ट आफ्टर हिज पार्टी कैंडिडेट विंस प्रेसिडेंसी, ठीक है ना. सो बिकॉज हिज कैंडिडेट एक्चुअली दोनों सेम पार्टी से आते हैं, सो नाउ ही इज एक्चुअली help the president, the former president come out of the jail. Okay, so that is what it is, है ना. And the पुराने वाले थे, the earlier one, President Saleh was actually better as far as India relations is concerned and all. अब देखो लिखा ना, यामीन is considered as Muizzu's mentor, यानी कि ये जो he is actually the mentor of him. mentor में देखते से गुरु हैं, इनके गुरु हैं ये, समझ लो एक तरह से, like political guru and all. That is what the author is saying. ठीक है, तो यही चीज है. अब let's see कि he was the India out campaign में, the current president was campaign for former president Yamin outgoing India's first policy and all. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि they were actually very supportive of India out campaign. Okay, and ठीक है, और जो इससे पहले जस्ट पहले जो थे मोहम्मद सॉली, he was supportive of India's first policy. So the new president is actually let's see what will be his further response as far as India's relation is concerned. So देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, एंड यस इफ इट कम्स टू द मालदीव्स दैट इज आल्सो एन इशू. देखो इंडिया के लिए है इशू, देखो क्यों. अब देखो यहाँ पर इंडिया है, दिस इज चाइना, एकदम पास में है मालदीव्स, ठीक है. एक एयरपोर्ट का डील था, देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, हाँ, विद जीएमआर आउट चाइनीज फर्म बैक्स माले एयरपोर्ट डील. देखो ये 2014 की न्यूज है. एक्चुअली हुआ ये था कि माले का एक एयरपोर्ट है, वो जो जीएमआर को इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट मिला था. जीएमआर इज एन इंडियन कंपनी. However, this was cancelled and it was given to some Chinese company. So which is also, I mean, not very good for India. वो उस टाइम पर उतना अच्छी बात नहीं थी इंडिया के लिए कि कैंसिल कर दिया गया था नॉट. So that is what you should be knowing it. हाँ, और नजदीक चूंकि पास में है ना, अगर यहाँ पर चाइना को कोई पोर्ट वगैरह हो जाए तो ऑफ कोर्स इट विल बी ए सीरियस थिंग फॉर इंडिया. जैसे चाइना का श्रीलंका का एक हम्बनतोता पोर्ट है. I hope you are aware that has also become a part of Belt and Road Initiative of China. So if one of the port is given, Maldives port is given to China, then of course it will become a serious security issues for India. So of course Maldives should, in India, for India, Maldives is also very important from maritime security point of view. ठीक है, समझ हो ना. हाँ, yes काव्या, very good. हाँ, so इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. हालांकि छोटा सा कंट्री है लेकिन तो भी इंपॉर्टेंस तो है, ठीक है. अब देखो क्या है, मालदीव्स इज प्रेजेंट, इंडिया एंड मालदीव्स इज प्रेजेंट इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है. इवन सार्क में भी बोथ इंडिया एंड मालदीव्स इज देयर. बिम्स्टेक में मालदीव्स नहीं है. आई हैव टॉट यू इन द पेड क्लासेस एंड बिम्स्टेक सार्क सब पढ़ाया हुआ हूं. सो बिम्स्टेक में मालदीव्स इज नॉट प्रेजेंट, बट यस टू इनवाइट मालदीव्स एज ऑब्जर्वर, है ना. न्यू दिल्ली शुड क्रिएट, तो ये रिकमेंड करें, ऑथर लिख रहे हैं कि बिम्स्टेक को बिम्स्टेक में मालदीव्स को भी इन्वाइट किया जाना चाहिए. दैट इज व्हाट द ऑथर इज रिकमेंडिंग. अदरवाइज जो मालदीव्स है वो सार्क में है ना. देन द नेक्स्ट वन इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो होता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, उसका पार्ट है. क्योंकि एक्चुअली एक और इशू किया कि सार्क जो है ना वो बहुत सक्सेसफुल अब नहीं है, मतलब रिसेंट ईयर्स में उतना डेड प्लेटफॉर्म माना जा रहा है. 2014-15 के बाद शायद कोई समिट भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए सार्क पे उतना शायद, हाँ एटलीस्ट. तो अगर बिम्स्टेक है, जो इस रीजन में बिम्स्टेक ग्रुपिंग है ना, I have taught you 7 members countries is there, so we can call it I mean Maldives as observer state in BIMSTEC and all. ठीक है, तो मालदीव्स इंपॉर्टेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. सेंटर मस्ट हिट द पॉलिटिकल मैसेज. तो ये भी पॉलिटिकली आर्टिकल एक्चुअली क्या हुआ था कि करगिल में इलेक्शन हुआ रिसेंटली एंड 22 out of 26 सीट्स वन बाय एनसी एंड कांग्रेस अलायंस. एनसी इज नेशनल कॉन्फ्रेंस. नेशनल कॉन्फ्रेंस इज उमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला's पार्टी, है ना. सो जस्ट हैव एन आइडिया. ये तो वी हैव डन इट, है ना. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड ऑल. तो इसको इसमें आफ्टर 5 August 2019 व्हेन द स्टेट गॉट स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, दिस वाज द फर्स्ट इलेक्शन एंड ऑल, ठीक है. जस्ट हैव एन आइडिया. ये वाला जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है एंड दिस इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी, मतलब ये भी सॉरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है एंड दिस इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है.
both are union territory. I hope you are aware. So उसके बाद एक आर्टिकल थी we need evidence based traditional medicine. ठीक है, अब इसमें भी बहुत डिटेल में गए. सो ही इज एक्चुअली कोटिंग एन इंडिजिनस द केस फाइल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिजिनस ड्रग्स अगेंस्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन द ग्राउंड दैट सोशल मीडिया थ्रेड अफेक्टेड हिज बिजनेस एंड ऑल हैज बिकम अ कॉज ऑफ सेलिब्रेट इन मेडिकल सर्कल्स. अब देखो इन्होंने इसका नाम नहीं लिखा है, पता नहीं कौन से केस में रेफर कर रहे हैं. मतलब बता ये रहे कि इंडिया का मेड इन इंडिया ड्रग्स मैन्युफैक्चर उसने केस किया है किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर पर, यानी परहैप्स किसी डॉक्टर पर, कि उनकी वजह से उनके सोशल मीडिया के मैसेज से उनके बिजनेस पर असर पड़ा है. So that is what he's talking about. I don't know which one he's talking about. So then he's talking about तो modern medicine. अब वो explain करना चाह रहे हैं what is modern medicine, what is traditional medicine. ठीक है, तो जैसे इंडिया का ये in fact separate ministry है, आयुष मिनिस्ट्री we call it, है ना. Who is the आयुष मिनिस्टर by the way? बताइए तो. डॉक्टर हर्षवर्धन, मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, मिस्टर मनसुख मांडविया, मिस्टर भूपेंद्र यादव. Your time starts now. बताइए तो. Who is the Ayush Minister of India? अच्छा, आयुष का कुछ फुल फॉर्म भी, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी. ओके, है ना, आपको पता होगा. हाँ, मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, बी इज द राइट आंसर. नंदना and Nandita Kumkum, you all have answered it correctly. So he's a former chief minister of Assam. He's having Ministry of Ports, Shipping and Waterways as well as Ministry of Ayush. ठीक है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट. अच्छा, वो डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन में और ट्रेडिशनल मेडिसिन में, और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मॉडर्न मेडिसिन क्या होता है. तो उसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें पता होना चाहिए. जैसे हैनेमन को आप जानते हो, होम्योपैथी का वन ऑफ द फाउंडर्स माना जाता है. होम्योपैथी मेडिसिन जानते हो ना. सो उसकी जो फाउंडर थे जर्मन थे, हैनेमन, एंड ही वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी एंड ऑल. ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि मॉडर्न मेडिसिन ये नहीं होता, वो होता है ना. तो इतना डिटेल अब नहीं जाना है. ठीक है, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. 2023 ऑन कोर्स टू बी द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. हाँ, अभी एक समस्या देखो, वो दिखा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है. तो इस परसेंटेज नहीं याद रखना, बट एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए. आप देख रहे हो ग्लोबल एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर एनोमलीज, तो आप देखो रहो यहाँ पर बढ़ रहा है. और ओके, then he has quoted it is average global surface air temperature for the 30 warmest month from 1940 to 2023. तो उतना पुराना से दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन महीना में कैसे कैसे बढ़ा है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दे हैव शोन इट. तो इसमें इतना नंबर्स वगैरह याद नहीं रखना, बट एक जस्ट हैव एन ओवरव्यू एंड ऑल. इनफैक्ट आपको पता है रेनफॉल भी उतना नहीं हुई थी अगस्त के मंथ में. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, एक चीज और है, ये पता होना चाहिए, कभी कभी ये एग्जाम में पूछते हैं कहीं कहीं पे. होलोसीन एक्सटेंशन कहते हैं, या उसको कहते हैं सिक्स्थ मास एक्सटेंशन. देखो वो क्या रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज हो रहा है, ये आपको पता है. एक्सटेंशन ऑफ एनिमल एंड बर्ड स्पीसीज हो रहा है. ओके, नाउ सो बेसिकली नेचुरल कॉज से भी होता है धीरे धीरे करके, बट दिस इज कंसिडर्ड एज सिक्स्थ मास एक्सटेंशन. और एंथ्रोपोसीन मींस ह्यूमन इंड्यूस्ड, इंसान की वजह से हो रहा, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन वी आर कॉजिंग. सो ह्यूमंस की वजह से ये बहुत फास्टेस्ट मास एक्सटेंशन माना जाता है. सिक्स्थ मास एक्सटेंशन कहते हैं, जिसमें डिफॉरेस्टेशन और पेड़ वगैरह बहुत तेजी से काटा जा रहा है. देन पॉल्यूशन इज डन एट मैसिव लेवल, एंड बिकॉज ऑफ विच ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, कॉजिंग द राइज इन सी लेवल. आप समझ रहे हो, सब एक दूसरे से लिंक होता है ना. तो दिस इज कॉल्ड एज होलोसीन एक्सटेंशन. अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो पढ़िएगा सिक्स्थ मास एक्सटेंशन करके. Okay, so go and read it. That would be very beneficial for you. Okay, the impact of Claudia Goldwyn's work. ये अभी मैं बता भी रहा था थोड़ा देर पहले. So we were talking about she is actually the Nobel Prize in Economics winner this year, है ना. She won Nobel Prize in Economics, and her work was associated with women's participation in labor market. तो मेन चीज ये है कि लेबर मार्केट में वुमेन्स पार्टिसिपेशन क्या है. ओके, तो उसका उन्होंने पैटर्न पर रिसर्च किया. जैसे 1719 में 1820s में एग्रीकल्चर में वुमेन थी, फिर अब कम होते गई, इंडस्ट्री में आई. ठीक है, तो उसका अमाउंट कम होते गए. मैरिड वुमेन इन वर्कफोर्स, देखो ये परसेंटेज क्या है इसका, मैरिड वुमेन इन वर्कफोर्स लिखा है ना, ये परसेंटेज वाइज. तो उस जमाने में एग्रीकल्चर में मैरिड वुमेन काफी हद तक एग्रीकल्चर में रहती थी. फिर धीरे धीरे कम होते गया 1850s में, और 1880s आ गया, यहाँ पर आके और कम हो गया. सर्विस सोसाइटी मतलब सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होने लगा एंड ऑल. ठीक है, फिर चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, एक्सपैंडिंग एजुकेशन एंड कंट्रासेप्टिव पिल्स. सो जब से ये सब चीजें आई हैं, अगेन इफ यू सी द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स इज इंक्रीजिंग. ओके, तो एग्रीकल्चर में तो था 1820s वगैरह में, 1850s में, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया
सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन गॉट डिक्रीज। ठीक है, आप देख रहे हो, फिर धीरे धीरे गिरने लगा। फिर 1910 के बाद जब अवेयरनेस आया, एजुकेशन आया, कंट्रासेप्टिव पिल्स आया, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल, ठीक है, सब देन अगेन द राइट्स एंड ऑल, राइट्स वगैरह की बात करने लगी। सो अगेन द इट इज इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाट शी हैज बीन। तो इस तरह से इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व ऐसा कुछ बना है, दैट इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हाँ, थर्ड वुमेन इकोनॉमिक लॉरिएट, यस नंदरा, वेरी गुड। सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, है ना। सो इसको सेवेरेजेस रिक्स बैंक प्राइज भी कहते हैं, मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया था कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेवेरेजेस रिक्स बैंक प्राइज एंड ऑल, है ना। सो फर्स्ट कंप्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ वुमेन्स अर्निंग एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन एंड ऑल, ठीक है। सो जस्ट शी हैज बिकम द थर्ड वुमेन आफ्टर टू वुमेन, हाँ, मतलब थर्ड वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड द फर्स्ट टू डू सो सोलो। यानी पहली वुमेन बनी है जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में अकेले जीती है, सोलो मतलब अलोन। और अगर इन टोटल नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो थर्ड वुमेन बनी इकोनॉमिक्स वाले नोबेल प्राइज में। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट बिकॉज दे कैन आस्क इट। सबको लाइक बटन प्रेस कर दो गाइस, एवरीवन, वी आर सीइंग ओनली 14 लाइक्स, सो 30-50 प्लस लाइक्स ले जाओ एवरीवन, यस, प्रेस द लाइक बटन। First test flight of Gaganyaan mission scheduled on 21st October. I hope you are aware that Gaganyaan is actually to send a manned mission to space, and this is ISRO's first mission. लेकिन ये टेस्ट फ्लाइट है, तो शायद टेस्ट फ्लाइट में मोस्ट लाइकली इन टेस्ट फ्लाइट विल नॉट बी सेंडिंग मैन्ड मिशन, यानी इंसान नहीं भेजेंगे, पहले कुछ मशीन वगैरह या रोबोट वगैरह भेजा जाएगा, बिकॉज वी आर टेस्टिंग इट। वंस द टेस्ट इज डन सक्सेसफुली, ठीक है, तो यहाँ लिखा है टू कमेंस अनमैन्ड टेस्ट, है ना, पहले अनमैन्ड टेस्ट होगा, यानी बिना इंसान के भेजा जाएगा। मेन जो पर्पस वो मैन्ड मिशन है, ठीक है, बट जब टेस्ट किया जाएगा तो पहले अनमैन्ड भेज के ना, पहले कुछ रोबोट वगैरह भेज के भेजा जाएगा, फिर ट्राई किया जाएगा, देन आफ्टर दैट गगनयान मिशन विल बी सेंट, है ना। देखो यहाँ लिखा प्रिपरेशन ऑफ फ्लाइट TB-D1 आर अंडर वे एज द ISRO इज अबाउट टू कमर्स अनमैन्ड टेस्ट फॉर गगनयान मिशन, ठीक है। जितेंद्र सिंह इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेट ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ओके। So this is all about today's class. This is 2024 crash course and all. Please go to our app, go to CLAT section, and you will get the 3-day free trial for the next year if you are attempting 2025 also. For that also, है ना, आप अपने कोई से जूनियर उसको बता सकते हो that we are having courses for that. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.